प्रश्नकाल प्रश्न संख्या 21 श्रीमती साजदा अहमद। साजदा अहमद, मंत्री जी। Laid on the table of the house. प्रश्न संख्या 22 श्रीमती सुनीता दुग्गल। माननीय एक मिनट प्लीज, एक मिनट प्लीज। हाँ प्लीज। माननीय सदस्यगण, नहीं माननीय सदस्यगण, मैंने स्थगन पर कोई व्यवस्था दी है क्या? प्रश्नकाल महत्वपूर्ण समय होता है। आप सदन नहीं चलाना चाहते, प्रश्नकाल नहीं चलाना चाहते। माननीय सदस्यगण, सभी माननीय सांसद चाहते हैं सदन चले। क्या नारेबाजी से समस्याओं का समाधान होगा? क्या समाधान होगा? चर्चा संवाद से, चर्चा होगा बातचीत से। ये तरीका उचित नहीं है। सरकार की तरफ से मैं माननीय राजनाथ सिंह जी से आग्रह करता हूं, बताइए। अध्यक्ष महोदय, मणिपुर की घटना निश्चित रूप से बहुत ही गंभीर है और इसकी गंभीरता को समझते हुए हमारे प्रधानमंत्री जी ने स्वयं ही इस बात को कहा है, मणिपुर में जो कुछ भी हुआ है उससे पूरा का पूरा राष्ट्र शर्मसार हुआ है। और यहाँ तक कि मणिपुर की घटनाओं को लेकर कठोर से कठोर कार्रवाई किए जाने की बात हमारे प्रधानमंत्री जी ने कही है। और हम चाहते हैं कि मणिपुर की घटना पर संसद में चर्चा हो। मैंने ऑल पार्टी मीटिंग में स्वयं भी इस बात को कहा है और आज मैं फिर से सदन में दोहराना चाहता हूं कि हम चाहते हैं कि मणिपुर की घटना पर संसद में चर्चा होनी चाहिए। लेकिन मैं देख रहा हूं कि कुछ ऐसे राजनीतिक दल हैं जो कि अनावश्यक यहां पर ऐसी स्थिति पैदा करना चाहते हैं ताकि किसी भी सूरत में मणिपुर की घटना पर चर्चा न हो पाए। मैं स्पष्ट रूप से यह आरोप लगाना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय कि सचमुच यह प्रतिपक्ष मणिपुर की घटना को लेकर जितना गंभीर होना चाहिए वो गंभीर नहीं है। और अध्यक्ष महोदय, मणिपुर की घटना को गंभीरतापूर्वक लेते हुए उस पर चर्चा होनी चाहिए। फिर से मैं अपनी इस बात को दोहराना चाहता हूं और मणिपुर की घटना को प्रतिपक्ष भी गंभीरतापूर्वक ले। चर्चा नहीं करना चाहते, आप वाद विवाद नहीं करना चाहते, सदन नहीं चलाना चाहते। आप देश की जनता चाहती है सदन चले, मुद्दों पे चर्चा होगी, उससे समाधान होगा। नारेबाजी से समाधान नहीं होगा। सरकार तैयार है चर्चा के लिए, आप कहते नहीं हो। सदन की कार्रवाई 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। संबंधित कागजात को सभापटल पर प्रस्तुत करता हूं। श्रीमती साध्वी निरंजन ज्योति। महोदय, मैं आज की संशोधित कार्यसूची क्रम संख्या 2 पर मेरे नाम के सामने उल्लिखित पत्र सभापटल पर प्रस्तुत करती हूँ। आई करेक्ट माई सेल्फ, साध्वी निरंजन ज्योति। श्रीमती अनुप्रिया पटेल। Chairman sir, with your kind permission, I rise to lay on the table of the House papers mentioned against my name at serial number 2C in the revised list of business for today. कुमारी शोभा कारंद लाजे। माननीय सभापति जी, मैं आपकी अनुमति से आज राज्यसभा की संशोधित कार्यसूची के क्रम संख्या 2 पर अपने नाम के सम्मुख अंकित प्रपत्र क्रमशः हिंदी और अंग्रेजी में सभापटल पर रखती हूँ। Report of Department Related Parliamentary Standing Committee on Defence, Lieutenant General
Dr. D.P. Watts, retired. Honorable Chairman, I rise to lay a copy of the 39th report, the Inter-Services Organizations Command, Control and Discipline Bill 2023, approved by Standing Committee on Defense as listed against my name in today's list of business. Thank you. Reports of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Agriculture, Animal Husbandry and Food Processing, Shri Kailash Soni. श्रीमती रामीला बेन बेचार भाई बारा। धन्यवाद सभापति जी। मैं आपकी अनुमति से आज के कार्यसूची में क्रम संख्या 3ख पर मेरे नाम के सन्मुख यथा सूचीबद्ध कृषि, पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण संबंधी स्थायी समिति के 57वें और 58वें प्रतिवेदनों हिंदी अंग्रेजी संस्करण की एक प्रति सभापटल रखती हूँ। थैंक्स। Reports of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Labour, Textiles and Skill Development, श्री विजय पाल सिंह तोमर। माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से अपने नाम के सम्मुख अंकित विभाग संबंधित श्रम, वस्त्र, कौशल विकास संबंधी संसदीय स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक प्रति सभापटल पर रखता हूं। नंबर 1, कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय से संबंधित प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का कार्यान्वयन के संबंध में समिति के 36वें प्रतिवेदन, 17वीं लोकसभा में अंतर्विष्ट सम्मुक्तियों / सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई संबंधित 44वां प्रतिवेदन। नंबर 2, वस्त्र मंत्रालय से संबंधित मानव निर्मित फाइबर का विकास के संबंध में समिति के 37वें प्रतिवेदन, 17वीं लोकसभा में अंतर्विष्ट सम्मुक्तियों / सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई संबंधित 45वां प्रतिवेदन। नंबर 3, श्रम और रोजगार मंत्रालय की अनुदान मांगों 2023-24 के संबंध में समिति के 41वें प्रतिवेदन, 17वीं लोकसभा में अंतर्विष्ट सम्मुक्तियों सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई संबंधी 46वां प्रतिवेदन। नंबर 4, वस्त्र मंत्रालय की अनुदान मांगों 23-24 के संबंध में समिति के 42वें प्रतिवेदन, 17वीं लोकसभा में अंतर्विष्ट सम्मुक्तियों / सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई संबंधित 47वां प्रतिवेदन। और नंबर 5, कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय की अनुदान मांगों 2023-24 के संबंध में समिति के 43वें प्रतिवेदन, 17वीं लोकसभा में अंतर्विष्ट सम्मुक्तियों / सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई संबंधी 48वां प्रतिवेदन। Announcement. I have to inform honorable members that the Business Advisory Committee in its meeting held yesterday, the 20th of July 2023, has allotted time for government, legislative and other business as follows. 1. Statutory resolution seeking disapproval of the Government of National Capital Territory of Delhi Amendment Ordinance 2023 promulgated by the President of India on 19th of May 2023 and consideration. Please let me. Are you? Can't you have some decorum? Can't you have some decorum on this? On. Please take your seat. Take your. Please take your seat. Please take your seat. He wants. Dr. Keshav Rao wants to raise a point of order. Take your seat. Take your seat. I allow him. Please take. Let there be order in the house. Let there be order in the house. Please take your seat. Please take your seat. Honorable members, I have said on number of occasions, this house. 1 second, sir. Take your seat.
I give time to everyone in accordance with rules. This house is the upper house. This house is the house of elders. Our conduct is being watched by more than 1.3 billion people. We have to exemplify our conduct so that we can be appreciated. Can you keep quiet for a moment? It has become your habit to rise and raise a point. I give time every time. It is not a public street. It is not a platform. Keep your silence, please. No. Dr. Keshav Rao. Dr. Keshav Rao. What is Gaya Samadhi? Read Constitution, get guidance, get enlightened, so that people do not laugh at us. What is unconstitutional is not in a word. That is why you need to study, Dr. Keshav. One second. Sam, I am seeking only a clarification, not a point of order. 1 second. What is your point of order? Clarification is, when only yesterday... No, you are... Clarification from the chairman over the subject that we are taking up. The clarification is, if a court takes up the issue which the House is discussing, do we allow? That is, I am leaving it to you. One second. Honorable members, I need to inform you that Dr. Keshav has raised a good issue. And the issue is that if a matter is pending before a court of law, should this House be considering? Am I right? Again, it has already taken up, that is the sub judice. Today, yesterday only, it has taken up and referred it to... I get your point. That is the now, honorable members, the entire country has to be enlightened by us. The entire country has to get our message. What does the Constitution say on this? There is a constitutional prescription that puts a bar on discussion in the House in a very qualified manner. I had the occasion to give my ruling on a point of order that this House is entitled to discuss everything under the planet with one restriction. And that restriction, honorable members, is germane to the issue Dr. Keshav raised. And that is Article 121. It is for this House to generate light all around. It is for this House to clear the confusion, to clear the cloudy weather. And Article 121 says, restriction on discussion in Parliament. Am I clear, sir? So the only restriction generated in the Parliament has been given to us by our founding fathers, and that is no discussion. No discussion. Raghav Chadha, listen to it. You need to understand. No discussion, honorable members, no discussion shall take place in Parliament. No discussion shall take place in Parliament with respect to the conduct of any judge of the Supreme Court or of the High Court in the discharge of his duties, and that is also restricted. That can also be done, but there is another method, and that is except upon a motion for presenting address to the President praying for removal of the judge as hereinafter provided. Honorable Member, 1 second. Let me conclude first. Let me conclude. Therefore, the concept of sub judice is totally misconceived. I know, sit down. Don't talk on an issue on which you are not prepared. No. Honorable members, honorable Mr. Sanjay Singh, I may have to name you. Take your seat. I have not given you permission to rise. Mr. Chadha, you are not on your seat. No. Is it the conduct you learned? No. Is it your conduct that you will travel all over the House? I can tell you, take your seat. Don't run down your reputation.
Sit down. Mr. Tiwari, Pramod Tiwari has a point of order. Pramod ji. ये लोग हल्ला कर रहे हैं वहाँ पे। रूलिंग पार्टी वाले क्यों खड़े हुए हैं? Come on, settle down. Pramod ji, what is your point of order? सर, मुझे बहुत विनम्रता के साथ, बहुत ही आदर के साथ आपसे कहना है कि आज take your seat. Take your seat. हम सभी ने You can't be Raghav Chadha like a delinquent student. आपका You ध्यान must learn to be decorous. Take your seat when others are speaking. That is the minimum requirement. Go ahead. बहुत ही विनम्रता से आप आग्रह करना चाहता हूँ आज कि आपकी बात अपनी जगह। What is your point of order? सिर्फ ये पॉइंट ऑफ ऑर्डर है कि सर पूरा देश मणिपुर की वजह से जल रहा है, शर्मिंदा है। जो घटित घटनाओं की एक बार मुख्यमंत्री ने कहा है Consideration and passing of the Forest Conservation Amendment Bill 2023 have been reported by the Joint Parliament. Do you really have a point of order? Sure about it? Okay, sit down. Point of order. Okay, Mr. Derek O'Brien, your point of order. Sir. Please settle down. Yes, sir. Professor, I have take it. I have a point of order today, sir. Page 91, 261 and 262 regarding the expunging of words used in Parliament. I've got two examples, sir, which we can quickly correct. 261, what can be used, what can't be used. Sir. What is your point of order? That about the words being used in Parliament just now. What is your point of order? These words need to be... What is point of order? My point of order is the... Sir, my point of order is in Rule 261. Derek, one second. Is One is second. the word... 1 minute, sir. One second. I know. Raghav, take your seat. Just 1 second, Raghav. Is something wrong with your seat? It, yaar. Every time you jump. Derek, 1 second. Sir, my point of order is get your point. on the words which can be used in this house or not. That's my limited point of order. I'm going to give you 261, 262. All Two right. examples. Yes, sir. Very fine. But what is the point of order? The point, Lord, sir, please, three words were expunged. I'm going to give you 4 words. Yesterday we said the Prime Minister should open his mouth on Manipur. His Prime Minister got expunged. Manipur got expunged. Why? It is expunged. Sir, One what second. word used? One second. You called him a One second. Sir, No, 1 second. you called him a No, 1 second.